रुक जा कितने देखते हैं। हाँ देख ले देख ले। कौन थे भाई। चल पटपट उड़ाते हैं। वही वही। ओ स्टार्ट फ्रॉम बिजनेस व्हीकल। भाई सीधा बिजनेस व्हीकल। हम्म। चल चालू करते ठीक हैं। है। वेर एन इंडिविजुअल Where an individual decides to start a business, one of the most important factors to consider is how to own it. भाई मैं बिजनेस व्हीकल सोच के मैं वो कार के इसमें चला गया एम्प्लॉयमेंट शी भाई। डायरेक्ट ओनरशिप विल बी एज अ सोल ट्रेडर और if there is more than one person involved मैं a भी वही partnership। कैसे ठीक चला है। भाई, मैं भी The au- उधर ही गया था। इधर थोड़ा उधर ही वही गया था। ऐसा क्या नाम है। The alternative is to set up a limited company and own the assets through the company. The individuals involved in the will then be shareholders and probably directors of the company. हम्म। Each method has its own tax implication. The main areas that need to be considered are as follows: what amount does the individual pay on the tax? Is there a liability to NIC? Where is any tax payable or commercial consideration? Summary of differences. The main differences between operating as an unincorporated business or as a company can broadly be summarized. ये तो अपने को पता है। ठीक है वैसे तो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आर चल टैक्स अंडर जाने दे। इनकम टैक्स रूल्स, इसमें कॉर्पोरेशन टैक्स पे होते हैं। स्किप कैश स्किप बेसिस भाई। इधर रहता है। ठीक है ठीक है ठीक है स्किप। रुक जा, वैट और इधर रुक इतना जा, भी वो पता लॉसेस है देख अपने लेते को। हैं, लॉसेस चाहिए तो देख लेते हैं भाई। अपन लॉसेस में बीच बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉरी यार सर। रिलीफ लॉसेस यस यस यस। रिलीफ फॉर लॉसेस रिलीफ अवेलेबल अगेंस्ट टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स बट इसमें इतना ओपनली नहीं दिया रे सब कुछ नहीं एक्सप्लेन किया है। ठीक है। लॉस रिलीव्ड अगेंस्ट कंपनीज टोटल प्रॉफिट्स इनकम एंड गेन्स ओनली। फिर ओपनिंग ईयर्स रिलीफ लॉस इन एनी ऑफ द फोर टैक्स ईयर्स फर्स्ट फोर टैक्स ईयर्स सेट अगेंस्ट टोटल इनकम ऑफ थ्री प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। अरे यार थ्री प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स इन फीफो बेसिस। इसमें नो ओपनिंग लॉस या रिलीफ। फिर रिलीफ अगेंस्ट टोटल इनकम ऑफ करंट और प्रीवियस टैक्स ईयर। करंट ईयर सेट अगेंस्ट टोटल प्रॉफिट्स इनकम एंड गेन्स ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। एक्सटेंशन अगेंस्ट चार्जेबल गेन्स इन द सेम ईयर। अच्छा रुक 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 इधर पहला क्या है। रिलीफ अगेंस्ट टोटल इनकम ऑफ करंट और प्रीवियस टैक्स ईयर। इधर है तीन टाइप के करंट ईयर प्रायर ईयर और कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड। Prior years set against total profits, income and gains of previous 12 months और against future total profits। और यहाँ पे एक्सटेंशन अगेंस्ट चार्जेबल गेन्स इन द सेम ईयर। हाँ ये तो कॉर्पोरेशन में भी होता है ना। ट्रेडिंग लॉसेस हम्म। तेरे बच गए तो करंट ईयर के चार्जेबल गेन्स के सामने कर सकता है। यस यस। कैरी फॉरवर्ड अगेंस्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ऑफ खाली सेम जो ट्रेड इसका ओके। है ना कॉर्पोरेशन टैक्स का प्रायर ईयर, उसमें ऐसा है कि पहले करंट ईयर के सामने फिर बाद में प्रायर ईयर। करंट ईयर ऐसा। यस यस। विड्रॉवल ऑफ फंड्स क्या है। नो टैक्स इम्प्लीकेशन ऑल प्रॉफिट्स ऑलरेडी टैक्स्ड ऑन द इंडिविजुअल एज ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। ओके इसमें सैलरी वैलरी पे एनआईसी भरो डिविडेंड पे अलग। ठीक है ठीक है ठीक है। वैट रजिस्ट्रेशन डिस्पोजल ऑफ बिजनेस गेन्स ऑन इंडिविजुअल चार्जेबल एसेट गेन्स आर बिजनेस एसेट। क्या गेन्स ऑन इंडिविजुअल चार्जेबल एसेट्स गेन्स आर बिजनेस एसेट। व्हाट द फक क्या बोल रहे हैं। और गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ फॉर बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ कहाँ होता सर। Gains on shares. Company register. Gains on shares. Share is an unquoted trading company while using by usually be business asset. Gift holder relief if shares gifted. Business asset disposal relief or investors relief on disposal. IHT 100% VPR, IHT 100% VPR गिफ्ट लेगेसी दोनों में सेम ही है। ये आई गेस ना वैट का ये लोग ने गलती से ऐसा डाला है। ये वैट इंडिविजुअल रजिस्टर और कंपनी रजिस्टर हम्म। रजिस्टर्स ये भी ये नॉर्मल पॉइंट्स जैसा ही है। गलती से बोल्ड हो ठीक गया है। है।
अभी consideration when choosing the relevant structure. Intention to withdraw profits. A sole trader is required to pay tax on the profits made, not the amount drawn out of the business. Where it is not intended to withdraw, where it is not intended to withdraw all the profits, it will probably be more advantageous to operate as a company. As the company pays tax at 19% or 25%, allowing the retained profits to be taxed at the lower rate. Although the future extractions of funds will potentially have further tax consequences. ओ ये तो पता ही नहीं था मुझे, कंपनी ऐसा कर सकता है। क्या समझा देखो, मतलब? नहीं क्या? ये लोग बोल रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं कि एज अ सोल ट्रेडर तू, ऐसा नहीं है तेरे को कि तू जितना प्रॉफिट्स निकालेगा उतने पे टैक्स भरना है, तेरे को जितना प्रॉफिट्स हुआ उतने पे पूरे पे टैक्स भरना है। बट एज अ हाँ। कंपनी तेरे को जितना प्रॉफिट्स हुआ उसमें से तू ये कर सकता है, रिटेन प्रॉफिट्स, अलाउइंग अलाउइंग रिटेन प्रॉफिट्स टू बी टैक्स एट द लोअर रेट। मतलब रिटेन प्रॉफिट्स अलग रख सकता है और जितना प्रॉफिट्स है उतना ही दिखा सकता है, ऐसा कुछ तो बोल रहा है। ये देखना ये पॉइंट। अरे मेरे भाई, रिटेन प्रॉफिट्स मतलब वो अपन बताए बैलेंस शीट में आते हैं तो अपने को उधर आता है शेयर कैपिटल और वो रिटेन्ड अर्निंग्स। वो रिटेन्ड रिटेन अर्निंग्स की बात है अर्निंग्स, ये, हाँ। तो वो तब मेरे को लगा था वो भी तभी भी ये टैक्स में इंक्लूड होते ही रहेंगे, मतलब वो साल के वो इसमें ये लोग बोल रहे बाद में आता है उसका इम्प्लीकेशन, मतलब बाद में कोई भी रेट पे लगते हैं वो, ऐसा ओके। समझा नहीं। ओके समझा, हाँ। मुझे 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 वो समझा तू क्या बोल रहा है। मतलब रिटेन प्रॉफिट्स हम्म, एट द एंड ऑफ द बुक्स में तो एफआर का तो पता है कि वो बुक्स में तो बाद में आते हैं। टैक्स में हाँ, वो तू टैक्स, अगर तू वैसे सोचेगा तो तू टैक्स तो बाद में पे करता है ना उस चीज के ऊपर, समझा? मतलब जब इनकर हुआ वैसा तभी। हाँ हाँ, तो वो नेट ऑफ तो बाद में ही होंगे। नॉर्मल प्रॉफिट्स तो उधर ही रहेंगे मुझे लगता है, क्योंकि तू टैक्स बाद में पे करता है तो उसका नेट इफेक्ट बाद में ठीक है, आएगा खाली, ऐसा। आजा, नीचे ओके आजा। ओके, ठीक है। इनिशियल लॉसेस। Initial losses. If business will start with losses, it may be preferable to structure it initially as a sole trader, allowing the losses to be used against the owner's total income and take advantage of the opening year loss relief, which is only available to individuals, not companies. हम्म। Only once the business becomes profitable, it may be incorporated if the company is preferred, if company is the preferred structure. Liability, where the liability is an issue, a company will probably be preferred since the corporate structure will limit the individual's potential liability or personal liability. However, it should be remembered that some business are not allowable to incorporate in case a limited liability partnership may be used. ओके। LLP क्या है? An LLP is taxed in the same way as an unincorporated partnership, with each partner paying tax on the share of the profits. Each partner's liability is limited to the amount of partner to the amount that partner invested in the LLP. However, there is no limit to the liability for work that the partner is personally responsible. हाँ हाँ, ये पॉइंट भी था, है मतलब ऑफ कोर्स। ये समरी दी है, ठीक है ठीक है। अभी क्लोज कंपनी यहाँ से मेन चालू होता है। So many owner हम्म। managed businesses will be closed company. A closed company is a company controlled by any number of directors or five or fewer ये पार्टिसिपेंट्स। participators. हम्म। So control means holding 50% of greater. The issued share capital of the company or the voting power. Sorry, control means holding 50% or greater of the issued share capital of the company or voting power, or the right to receive distributable profits, or the right to receive the net assets in the event of winding up. ठीक है? हम्म। A participator is primarily a shareholder to decide whether a group of individual has control of the company. It is necessary to include the shares of their associate. To हम्म। include the shares of their associate. Associates are taken to be the spouse or civil partner, children and issue क्या रहता है? पता नहीं भाई। Children इश्यू and तो पता है। issue, parents and remote ancestor, brothers and sisters and business partners. बच्चे इशू है।
आई थिंक एडॉप्टेड, A नहीं नहीं, आई थिंक company which एडॉप्टेड बच्चों के लिए रहेगा। ओके ओके, अ कंपनी इशू ही बना दिया भाई उनको। फॉस्टर चिल्ड्रन होगा अ भाई, कुछ तो कंपनी रहेगा which उसमें भाई, उधर उधर होते हैं भाई बहुत सारे चीजें। hmm. A company which is a subsidiary takes its status from the parent company. So if the parent company of a group is a close company, the subsidiary is also a close company. Oh हम्म। भाई, okay, बराबर. If the parent company is not a close company, the subsidiary will not be will not be close either. Even if it is a wholly owned subsidiary. ये बहुत लेम एग्जांपल था, अपन स्किप करेंगे. An examination question may require you to identify ये that the company is close. Therefore, you need to be able to spot a close company scenario, even if you are not told there is one. तो एनी नंबर ऑफ Spot a डायरेक्टर्स है। man. यस, एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है और 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स, ऐसा है ना। एंड मतलब और मतलब AUR वाला। हाँ. Yes, yes. ठीक है, चलेगा। Implications of close company status. In close companies, shareholders who may also be directors may have significant influence over company resources and decisions. There are anti-avoidance measures in place to prevent these shareholders benefiting unfairly from their significant influence over a company. हम्म। The principal ठीक है। measure the principal measures cover the provision of the benefits to shareholders and the provision of loans to or from shareholders. In considering the measures, the status of the individual must be identified. The individual may be a shareholder only, or the individual may be both shareholder, employee, or director. So the provision of benefits to shareholders, the provision of a benefit to an individual who is an employee or director is subject to employment income provision. हाँ. For company, the cost of providing the benefit is an allowable expense, and reduce the trading profits. For ठीक है, individual, the taxable benefit is calculated using employment income rules. एम्प्लॉयमेंट इनकम। ठीक है. ठीक है। The tax obligation for the company of the individual shareholder of the provision of a benefit to a shareholder who is not an employer director are as follows. कंपनी के लिए क्या, इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए क्या. द कंपनी इज डीम्ड टू हैव पेड अ डिविडेंड. देयर इज नो नीड फॉर द कंपनी टू हैव sufficient distributable profits as the provision of the benefit is not a genuine dividend. Okay. Individual or shareholder, no employment income charge possible as no office or employment. Oh, oh. The amount that is value of the dividend is determined using the benefit rules. The value of benefit is treated as a dividend. Cool. No जो trading profit deduction for the cost of providing the benefit as it is treated as dividend. This will be taxed in the year the benefit is provided. The first 500 of the dividend income is covered by nil rate band and the excess is इजी है भाई, taxed at इजी है, 8.75 in बस the ये individual बेसिक beneficiary. ही है। Yes. ये बेसिक ही है कि Hmm. अगर तेरे तू कंपनी को ओन करता है तो तेरे को डिविडेंड दे रही है कंपनी, दैट्स इट। मतलब अगर तूने कंपनी से कुछ भी पैसे लिए हैं तो Yes. उसको डिविडेंड माना जाएगा। खत्म। पूरा डिविडेंड माना जाएगा. और इसमें बोला है द प्रोविजन ऑफ अ लोन टू शेयर होल्डर. परफेक्ट। The provision of a loan to shareholder, irrespective of employment status, has the following implications for the company. There is a tax charge of 33.75% of the amount of the loan. The loan includes amount owed to the company by the participator, परफेक्ट। and also debts of the participator that have been assigned to the company. The charge is paid at the same time as the corporation tax liability, either 9 months and 1 day from the end of the accounting charge company's quarterly payment. हाँ ठीक है.
नो टैक्स इज पेएबल इफ द लोन हैज बीन रीपेड बिफोर 9 months. हाँ, ये क्या है? क्या था वो? नो विद अ टैक्स इज टैक्स पेएबल द लोन इज चार्ज पेड विद इन फॉर 9 मंथ्स। फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये मेरे को मतलब उस वक्त भी नहीं समझा शेयर था होल्डर को तूने बेसिकली। लोन दिया है। हाँ। अभी कैसा है, कंपनी है, गिने चुने शेयर होल्डर्स है, पर तेरे हाँ। को कंपनी से एक शेयर होल्डर है, उसको लोन मिला है। तो इसके हाँ। ऊपर पहले तो कंपनी टैक्स भरेगा एट द रेट ऑफ 33.75%, क्योंकि उसने शेयर होल्डर को लोन दिया है। बराबर। टैक्स भरेगा। फिर अभी भी शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर ने पूरा का पूरा लोन रीपे कर दिया 9 महीने में, तो कोई भी टैक्स पेएबल हम्म। नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स तो 9 महीने में तो तेरा फाइल ही नहीं हुआ रहेगा ना। तो ओके। फाइल करेगा, देन पूरा पेएबल हो जाएगा। ओके, मतलब मेरे को ऐसा ये लग रहा है, मैं वो जो कॉन्सेप्ट से बोल डिविडेंड रहा हूँ है ये क्योंकि सिर्फ मतलब ये जो डिविडेंड है ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि आज हमने लोन दे दिया तो हमें आज ही क्या मतलब पे करना है। ऐसा नहीं है, इसको हम बाद में ही करना है मतलब इसको नहीं। पे। ओके। हाँ हाँ हाँ, मेरे को ऐसा लग तो रहा है, मैं अगर वो कॉन्सेप्ट से बोल रहा था। ठीक है, अगर उस बंदे ने 9 महीने के अंदर पे कर दिया तो हमको एचएमआरसी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं तो है। कोई भी टैक्स तेरे को भरना नहीं है। ठीक है। यस। और अगर वो लोन शेयर होल्डर लोन धीरे धीरे करके पे कर रहा है, तो वैसे धीरे धीरे करके अपने को एचएमआरसी से ये लेना है, बराबर। रिफंड मांगना है। When the tax charge has been paid, it becomes repayable when the loan, हाँ ये देखिए वाला, where the tax charge has been paid, it becomes repayable when the loan is repaid, where part of the loan is repaid, the same proportion of the tax is repayable. मतलब एचएमआरसी से अपने को समझा द समझा लोन इज रिटर्न समझा। ऑफ। हाँ, अगर उस चीज को यस, राइट ऑफ ही द कर लोन दिया इज तो क्या रिटर्न ऑफ होगा? द कंपनी। हाँ, द कंपनी कैन रिक्लेम द टैक्स पेड वेयर द लोन वाज मेड. There is no deduction for the write-off against the company's profits for CT purpose. अभी ये राइट ऑफ कर दिया तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा बोल रहे हैं लोग। ओके, हाँ। तेरा टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालते समय। And at this point, the individual becomes liable for income tax and possibly NICs. If the individual is an employee, then class 1 employer's NIC will be payable, which will be an allowable deduction against the company's profits. Okay, तो इसके ऊपर मिलेगा तेरे को बेसिकली डिडक्शन। बेसिकली ये लोग ठीक है। बोल रहे हैं कि हम लोग ने लोन दिया एम्प्लॉय को या सॉरी शेयर होल्डर को, और अभी हम लोग बोल रहे हैं कि एक्चुअली वो हमारे पैसे दे नहीं रहे, तो जो हमने तुम्हें टैक्स पे किया था वो टैक्स हमें वापस दे दो, और बाकी वो के वापस पैसे दो। तुम उसी से जाके ले लो। लाइक उसका जो टैक्स है अभी अभी वो पे हाँ। करेगा, इसका जो टैक्स है। और वो बंदा जो पे करेगा वो यस। बंदा 20-40-45 के रेशियो में पे करेगा। देखेगा तो तू। हाँ बराबर। बराबर ना? यस। ये काफी सिक चीज थी कि तुम मुझे मेरा पैसे वापस दे दो, उससे उससे जाके ले लो। हाँ वही ना। As the tax charge will eventually get repaid to the company, it is merely a cash flow issue for the company. हाँ वही, of course. फुकट कैश फ्लो खराब कर रहे हैं भाई। No tax is हम्म। payable by the company where the loan fulfills three requirements. हाँ ये था. So the amount of loan is less than or equal to 15,000, and the individual is full-time working employee, and the individual, including associate interest, owns 5% of the shares or less. ओके, ये मुझे नहीं पता था। तीनों के तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए। ये भी मुझे भी नहीं पता था। पॉज करना चाहिए तो लिख लेता हूँ ये। चलेगा। अब भी चैप्टर चालू है। चल चल, खत्म कर दे जल्दी अभी जल्दी चैप्टर को। फॉर द शेयर होल्डर, there are no immediate tax implications for the individual when the company makes the loan. If the loan was written off, the individual will then become subject to income. हाँ ठीक है। Interest, where the company does not charge interest at least the official rate ORI, that is 2.25, there will be taxable benefit. The rule for the provision of the benefit applies as explained earlier. For an employee, the benefit will be taxed as earnings. ठीक है, नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए जैसा होगा वैसा। ए ऊपर है, और एक अति वो सेकंड लाइन क्या थी? When individual Where is the not an individual employee, is the not an benefit will be employee, the the dividend benefit. distribution.
तो फिर पढ़ भाई, क्या है, ओ, चार हिस्से भाई। मतलब डायरेक्टर अगर होता तो डिविडेंड जैसा, ठीक है। हाँ। अभी द प्रोविजन ऑफ लोन्स फ्रॉम शेयर होल्डर टू क्लोज कंपनी, उल्टा। हम्म। The shareholder may take out a personal loan in order to make a loan to or buy shares in a closed company. Income tax relief on interest paid on such borrowings is available as relief deducted from total income, provided the company is not a closed investment company. अभी closed investment company भी होते हैं भाई। The conditions are that the individual has a material interest of more than 5% in the company, is a full-time working officer or employee involved in the management of the company. ओके, तो ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गए तो तेरे को वो जो तू लोन बोरो किए उसका डिडक्शन मिलेगा। द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड फ्रॉम द टोटल इनकम इंक्लूड्स दिस टाइप ऑफ क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। तुमको समझा नहीं, एक मिनट, मतलब तू बराबर, फुल टाइम वर्किंग एम्प्लॉय देखा होना मैंने। चाहिए और तेरे को कंपनी में 5% का इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके तेरे को डिडक्शन मिलेगा तेरे पर्सनल बुक्स में। यस, एज अ क्वालिफाइंग इंटरेस्ट वो क्लियर होगा। ओके 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 ओके, ठीक है। फिर क्लोज इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ऑल क्लोज कंपनीज आर क्लोज इन्वेस्टमेंट कंपनी CIC unless their main activity is trading or letting property to unconnected person। अरे, ठीक है। छोड़ो। ठीक है भाई। फिर the tax consequences of CIC are as follows. CICs are required to pay corporation tax at the main rate at 25% irrespective of the level of profits. Okay, the shares will not be treated as business assets for IHT or nor CGT. Tax relief will not be available to any individual for money borrowed to investment in a CIC। बराबर। Tax relief will इन्वेस्टमेंट not be पर्पस के लिए कोई available तेरे को to an डिडक्शन नहीं मिलेगा। individual money borrowed to invest in a CIC। अच्छा, ओके ओके, क्योंकि उसका काम ही इन्वेस्टिंग है और तू उसी में अगर इन्वेस्ट करे तो तू क्या कर रहा है, मतलब ऐसा। शेयर हाँ। यूनाइटेड, ठीक है।